गुड मॉर्निंग में हमारा युद्ध ना हो ना वैसा हो नहीं सकता, एक के बाद एक मुंह चढ़ाना स्टार्ट होता है, झगड़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि आदि को टाइम लगता है सभी चीजों में। શું આજે નોન યુનિફોર્મ ડે છે એટલે હું આપે મૂકવા જાય. ઓકે હા it is Then why you wearing that then? आदि तार बैग ले ले पहला। anyway first of all good morning everybody and welcome back to our channel। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जय के साथ शुरू करते हैं हमारी दिनचर्या। तो आज हो गए हैं गिरीश तैयार और मैं भी तैयार हो गई हूँ। कहीं जा रहे हैं, बताइए कहाँ पे? वैसे थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, हम लोग जा रहे हैं आज तुलसी जी और ठाकुर जी का लगन लेखन है, तो वहां पे तो लेस्टर में जा रहे हैं, लंदन नहीं जा पाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल है वगैरह, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पे फिर से मेरी मम्मी की फेवरेट जो लीली साड़ी, ग्रीन साड़ी के साथ हूँ तैयार। सो देख लीजिए, बहुत ही मुझे पसंद है ग्रीन साड़ी, मेरी मम्मी की तरह। मेरा रेड कलर फेवरेट है और मेरी मम्मी का ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर तो पहनना बनता है। और गिरीश का पिंक कलर है। गिरीश यस क्या बद्दा बदा बदा आपने कोई स्पेसिफिक शेड नहीं। हाँ, जो भी अच्छा लगे है ना। हाँ। गिरीश को वैसे साड़ी बहुत पसंद है, वो हर बार बोलते हैं कि ड्रेस मत पहनो, साड़ी पहनो। तो मैं मुझे साड़ी ज्यादा पसंद है हाँ, तो लेडीज पर। तो इसीलिए मैंने साड़ियाँ इतनी ज्यादा ले ली है ना, तो ड्रेस कम पड़ रहे हैं। तो अभी मम्मी भेजने वाली है साड़ियाँ और ड्रेस भी क्योंकि ड्रेस सारा फिनिश हो गया है, मेरी साड़ी बची हुई है। ये सर तो कैसी लग रही है साड़ी? अच्छी है, ठीक है, मस्त है। चलो रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट वीक से बोल रहे हैं, पता है एक दिन स्नो भी है अभी वही ना, अभी तो नवंबर मिड आ गया। तो स्नो गिरने का बोल रहे हैं। आई विश एंड आई होप कि ना गिरे। और मेरे पिंपल की हालत धीमे धीमे सुधरने लग गई है। अभी नया कोई नहीं आने वाला, पुराना है, उसके दागा रह गए हैं, उसके जो यहाँ पे वहां पे धीमे धीमे जाएंगे। जायफल दूध में घिसने के बाद लगाने को बोला है, तो उससे थोड़े थोड़े फेड होने लग गए हैं। आई विश कि ना आए नया गिरीश, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वेडिंग के टाइम पे ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मुझे नहीं पता चलता। एनीवे, नजर इज रियल। वो बोलता है ना रेल में, वैसे नजर नहीं लगती मुझे, तो क्या ही नजर लगेगी, पर जस्ट फॉर फन। लेट्स ईट स्लाइस ऑफ ब्रेड बटर एंड देन विल गो। ओके लेट्स गो। क्योंकि अभी टाइम नहीं है सुबह सुबह बनाने का, कुछ भी आने के बाद कुछ बनाएंगे। तो हो गए हैं यहाँ पे रेडी जाने के लिए, कार में बैठ गए हैं। आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे ना? नहीं, हाफ एन आवर है। हाफ एन आवर लगेगा? हाँ। अच्छा चलो अभी मैं वो पोस्ट कर ढूंढ रहा हूँ, तूने भेजा था वो। अच्छा चलो चलते हैं। રેડી કરી ચેતના છે ને, ગાડું બાડું બધું રેડી કરીને આવે. થઈ ગયા કેવું ગાડું? આવો આવો આવો. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. આવું છે આવું કોણ છે? કેવું છે? બસ જય સ્વામિનારાયણ. માતાજી આવી રીતે જો. અને આ લેબલ લગાડી દેવાનું છે હવે. બે કેમ ગાદ લ્યો છો આટલું? આમ નહીં સરસ લાગે? 4 જોડી કપડા છે ને, એટલે આપણે 4 વસ્તુ લીધી છે. એમાં 2 તકિયા ઓશિકા વાળી, 2 સિમ્પલ, બધું એની અંદર જ ભરી દેશું આપણે. ઓકે, હું આમ રાખું. ચાલો, આ સારું લાગે છે, એ અંદર જ મૂકું. ઈ હમણાં પાછું બધું ઉકેલ લેવું પડશે, લંડન પુગાડવું ને પછી આ જઈને રસ્તા ઉપર ઉભા રહીને આપણે પાછું ભાભી ગોઠવવાનું. वैसे हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही ज़्यादा मातम माना जाता है। तो हम लोग यूके में रहते हैं, पर पिछले 3 या 4 सालों से तुलसी विवाह का पार्ट बन रहा है, तो बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं। हमारी जो रस्में हैं वो रीति रिवाज से पूरी हो सके, ऐसा सब ट्राई करते हैं। અત્યારે આપણે લગન લખવા માટે પહોંચી ગયા છે, જ્યાં પહોંચવાનું હતું ને આમ બધા મેચિંગ કરી. જો ગ્રીન સાડી, તુલસી માતાને ગ્રીન સાડી પહેરાવી હતી ને, બધા ગ્રીન કલર છે. જો આ બી શું કહે, તુલસી માતા તરફથી છે, ચેતના જોડે. આઈ જા ચેતના, તમે બી આઈ જાઓ. જો બધા ગ્રીન આમના દેરાણી છે આ, તો બધા ગ્રીન ગ્રીન છે. જો આમ જોઈએ તો હું તમારી દેરાણી થાઉં. એવું છે? અત્યારે તો વેવાણ થાય તમારે. અત્યારે મારું વેવાણ છે.
કેમ કે અમે લોકો છે ને ઠાકોરજીના અમાર મામા છે. તુલસીના મામીજી છે. હા એટલે અમે ઈ તરફથી આવ્યા તાર પાસે. ના ના થેન્ક યુ થેન્ક યુ તે ઇન્વાઇટ કરી. ને તમે વટવક્ષ વાળા હાચો. મામાજી જો આ મામાજી બેસી ગયા જા. ઈસાઈને એનું ધ્યાન રાખવું નો ને. રે, અમારે ઈલા બેસા આવ્યા. मामा जी तो नो रिसाई फुआ जी रिसाई ફુવાજી ઈસાઈ, હા. तो करियावर है पूरा का पूरा तैयार। यहाँ पे ठाकुर जी के लिए जो है वाघा लिए है वो है, तुलसी माँ को अच्छे से रेडी किया हुआ है। देख लीजिए इतने ब्यूटीफुल श्रृंगार लग रहा है। ના લખાય એવું જ લીધું છે. અલા લાલ પેન છે, હા તમારી ઓલામાં છે લાલ પેન જો અત્યારે યાદ આવ્યું. છેલ્લે કઈક યાદ તો આવે જો. દાદા કેટલા તુલસી વિવાહ કર્યા? પહેલા જ છે? ના ના આ વર્ષે મેં કીધું કદાચ લેસ્ટરમાં થયા છે કઈ? મંદિરમાં કામ નહીં કરું એટલે મંદિરમાં હું હોસ્પિટલ કામ કરું એટલે મારા હોસ્પિટલમાં લઈને કોઈ ઓછા હોય કામ. ઓકે હા હા. ચાલ દાદા લગ્ન લખવા માંડ્યા છે. यहाँ पे स्टार्ट हो गई है गंगोत्री लेखन। ચોવીસ તારીખે લગ્ન છે આપણે. કાશી ઋષિકેશ ત્યાં ગુરુકુલ વિચારી જાવ ક્યાં ખબર. શું વિચારો છો? આવડે બધી આ બ્રાહ્મણ વિધિ બધી કરાવે ને એ બધી શીખવાનું. હવે ઈ લાઈનમાં વયું જાવ છે આપણે. તો આમ થાય દાદા એક લેસ્ટરમાં નથી પહોંચી વળતા એવું થાય દાદા? બે વાંધો નહીં. સાદું બનાવવાનું ફોર્મ કીધું ને તો એ મળતું નહીં. મારો બિઝનેસ ઠપ છે. જો અહીંયા અમારે 70 બ્રાહ્મણ છે. એવું છે? ચાલે. હા એટલે આ દાદાનું જ ચાલે છે હમણાં. ના બધાનું ચાલે, હવનું ચાલે. એવું છે? હે પણ પણ અહીંયા તો અમે તમને જ જોયા છે એવરીવેર. હે દાદા પટેલો શીખવાડે મહેન્દ્ર શીખ્યા વગર કેમ રહેવાનું? ગિરીશ મારી બર્થડે લખાણી છે અહીંયા. હા 24 તારીખે તારી બર્થડે આવે છે. એ તારીખે ફેરે જ છે. 24 તમારો બર્થડે, 25 અમારી દાદા એ કુંડલીમાં શું હોય લખવાનું? ગ્રહોનું હોય, ગ્રહ લખવાના હોય. પછી ટાઈમ ટાઈમ અને પ્લેસ અને પ્લેસ લેસ્ટરનો. એના પછી ગ્રહ મૂકવાના. આપણે પછી બે જોડે હવે છે ને પાકું લાગે. શીખવા મળ્યા ગિરીશ અત્યારથી. મને હવે ડાઉટ લાગે છે હે ને? નક્ષત્ર શુક્લ પક્ષ ને સૂર્ય પક્ષ ને બધું એમ. ના ના ગિરીશ આપણે હજી છોકરા નાના નાના છે. તે નાના હોય તેમાં હું આપણે શીખાય નહીં. લેસ્ટરમાં થાય તો કરું. શું કે પરેશભાઈ? તે ખોટી વસ્તુ છે તો પછી એના એક જ ઉપર કરીને જો લગન લખાઈને કર્યા ગાડામાં મૂકી દીધું છે. આ ગાડું કોણ લઈને આવવાનું છે? હું જ આવવાનો લંડન થી જાન લઈને. બાકી બધા કારમાં આવશું, ગાડું લઈને આવે બળદગાડું. તમને પ્રેક્ટિસ રહી ને? પ્રેક્ટિસ માં બળદિયા ચલાવવાની તો. है घर की और जो पत्रिका लेखन होता है वो हो गया है डन. अभी ये लोग जाएंगे वहाँ पे लंदन टिकू बहन के वहाँ पे. तो उसके बाद सारी प्रोसेस धीमे धीमे स्टार्ट होगी. ऐसा बोला जाता है कि लगन लखान के बाद हर रोज 2 जो लग्न गीत होते हैं ना वो गाना पड़ता है. तो यहाँ पे तो 1-2 लाइन. तुलसी विवाह एक्चुअली कहाँ पे होने वाला है? तो वो होने वाला है लेस्टर में. टेम्पल स्वामीनारायण जी का है तो वहाँ पे है ना गिरीश? यस. लगबड़ो रोड है. तो एक कमेंट आई थी कि कौन सा मंदिर है, तो स्वामीनारायण टेम्पल लगबड़ो रोड वहाँ पे होने वाला है 23rd and 24th नवंबर. मेन मैरिज है 24th को.
मेरा बर्थडे के दिन है तेरा बर्थडे आ रहा है? तीन बजने वाले हैं और यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लग गई हूँ दोपहर को। बताओ, यहाँ पे सेव टमाटर की सब्जी बन रही है। टमाटर की सब्जी के साथ वैसे तो भाकरी अच्छी लगती है, पर मैं बनाने वाली हूँ रोटी या मैं भी पराठा बनाऊँ। आटा गूंद के बच्चों को लेके आऊंगी। तो शिवांश भाई आ गया है स्कूल से, आ गया है नहाने के लिए। हेलो शिवू। हाय। हाय। तो क्या बता रहे थे तुम? તો કાલે છે ને એક ફાઇટ છે માઇક ટાયસન અને જેક પોલનું. માઇક ટાયસન એક ફેમસ બોક્સર હતો પણ રિટાયર થઈ ગયો, બહુ ફેમસ હતો અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. અને જેક પોલ છે ને એક ફેમસ ઇન્ફ્લુએન્સર છે બોક્સિંગનો. એટલે એ બે ફાઇટ કરવાના છે કાલે 1 o'clock આફ્ટરનૂનમાં. એવું છે? તો તને જોવું છે? હા, નેટફ્લિક્સમાં એવું છે? લાઈવ. હા, તો તમે લોકો જોવાના છો? કોમેન્ટમાં બતાવો. શિવાંશ તો એક્સાઇટેડ છે, જો આવીને તરત મૂકી દી આ સ્ટોરી, है ना? वेल नोन છે. तो शिवांश को ऐसे पता होता है मोस्टली चीजें स्कूल डिस्कस થાય. ના, મને તો ખાલી ખબર હતું, હું જોયો તો નેટફ્લિક્સમાં એટલે. ઓ, નેટફ્લિક્સમાં ખબર હતી? ઓકે, નેટફ્લિક્સમાંથી જોયો. હા, એટલે હું જોઈ લીધું, એટલે કઈ ટાઈમ ને બધું હતું, એટલે તો કાલે જોવાનો. ओह सरस सरस. मैंगो हो गए हैं शिवांश के लिए तैयार. ले मैंगो. क्यूकम्बर खावी છે સાથે? થોડીક જ. तो शिवांश को क्यूकम्बर टमाटर वैसी चीजें ना, वैसे भी क्यूकम्बर तो हम लोग कुक नहीं करते, पर टमाटर वगैरह वैसी चीजें उसको वो बोलता है कि रॉ खाने की चीज है, कुक मत किया करो. तो मैं कुक नहीं, लाइक चेरी टमाटर वगैरह उसके लिए लाती रहती हूँ. એટલે મમ્મા કોને કેરેટ કુક્ડ ભાવે? ખાય ને બોઇલ્ડ એગ, સોરી બોઇલ્ડ કેરેટ ને બધું ખાય ને મોસ્ટલી. તું ખા? મને ભાવે. મને સેજે ના ભાવે. તને આવું બધું સેલેડ ભાવે ને? પણ કુક્ડ વાળું ના ભાવે. तो अभी तो सिर्फ 7 ही बजे है और देख लीजिए हमारी स्ट्रीट की हालत. यहाँ पे कोई भी कार कुछ भी नहीं आता जाता, इतना सन्नाटा हो जाता है ना, लाइक ऐसा लगता है कि रात के 10 बज गए हैं. आज की ये फ्राइडे नाइट है. अगर आप लोग सिटी सेंटर या लाइवली कोई सिटी में जाओगे ना तो वहाँ की चहल पहल ही कुछ और होती है, पर यहाँ पे अभी जो एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे एकदम ही क्वाइट है. तो बस यही है आज का व्लॉग. तो यही था आज का वीडियो. प्लीज़ कमेंट में बताना और किस टाइप के वीडियोस शादी वाले देखना चाहते हैं. वैसे जो जो आएगा वो तो मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ. फिर भी एक्स्ट्रा में कुछ अलग कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कमेंट भी कर सकते हैं. तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर दे रही हूँ. कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए. अच्छी सी बाय बाय एंड टेक केयर.